Honorable Federal Minister for Communications, Government of Pakistan, Mr. Abdul Aleem Khan, to deliver his concluding remarks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Honorable Prime Minister of Pakistan, Mian Mohammad Shehbaz Sharif, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. As we draw this landmark Regional Transport Ministers Conference 2025 to a close, allow me to express my deep appreciation to all the participating ministers, deputy ministers, senior officials, and representatives from our partner organizations, including the IRU, ECO, ADB, ISTB, and the United Nations, for your valuable contributions and active engagement over these 2 days. Your presence in Islamabad has reaffirmed our collective commitment to strengthening regional transport connectivity, not merely as a means of building infrastructure, but as a pathway to shared opportunity, economic integration, and sustainable prosperity of our entire region. Excellencies, under the guidance of the Honorable Prime Minister of Pakistan, Mian Mohammad Shehbaz Sharif, we have reiterated our resolve to pursue a vision of regional cooperation that connects our economies and our people. Pakistan remains steadfast in implementing forward-looking initiatives such as Vision 2025, the 5 E's framework, and our national transport policies and digital trade facilitation platforms, all designed to modernize logistics, streamline cross-border movement, and foster an enabling environment for regional trade. Our discussions over the past 2 days have been both substantive and futuristic. We collectively recognized the urgent need to bridge missing infrastructure, links for seamless regional transit, the importance of innovative financing, and partnerships with international development institutions to realize these capital-intensive projects, the significance of harmonizing regulatory frameworks for road and rail transport, and the transformative potential of digitalization, smart corridors, and paperless custom systems in enhancing efficiency. Excellencies, to further strengthen regional connectivity, participants emphasized the importance of liberal visa facilitation schemes for drivers, crew members, and logistic personnel to ensure smooth and uninterrupted cross-border transport operations. In this regard, the ECO visa sticker scheme was recognized as a valuable initiative that can serve as a model for promoting ease of movement among transport professionals, fostering greater regional integration and operational efficiencies. We also underlined the importance of road safety, the protection of vulnerable users, and the harmonization of safety standards, ensuring that connectivity is not only faster, but safer for all. Ladies and gentlemen, in the maritime sphere, we reaffirmed our shared interest in promoting a blue economy with Gwadar Port envisioned as a future hub of regional trade and prosperity. This conference has demonstrated that our region holds immense potential when we work together with trust, with vision, and mutual respect. The discussions and recommendations emerging from this forum will serve as a foundation for practical cooperation and policy alignment in the months ahead. Let me assure you that Government of Pakistan stands ready to continue facilitating dialogue, partnerships, joint ventures, joint initiatives that will advance our shared connectivity agenda. In the end, I once again extend heartfelt thanks to all the delegates, development partners, and ministers for their participation, and all those who worked tirelessly to make this conference a success.
May our collaboration continue to strengthen the bonds of friendship and progress across our region. Thank you so very much. Pakistan Zindabad. Thank you, Honorable Minister, for those insightful closing remarks and for your leadership in steering this vital regional initiative. Thank you, Honorable Minister. Excellencies, ladies and gentlemen, it is my distinct honor to invite the chief guest of the closing ceremony, the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Muhammad Shehbaz Sharif, to address this august gathering. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister of Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister for Communication, Mr. Aleem Khan, Honorable Ministers from friendly and brotherly countries, Secretary General ECO, Honorable members of delegations from friendly and brotherly countries, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. On behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan, I would like to extend a very warm welcome to all of you and thank you for taking time from your very precious busy schedule to grace this occasion in Islamabad. Indeed, it's a very significant moment that we have gathered here today to have a very meaningful and productive dialogue at this point in time as to how to further strengthen our bilateral and multilateral relations in various walks of life. Ladies and gentlemen, for centuries, our land, Pakistan, which was carved out of subcontinent back in 1947 through great efforts and sacrifices by the Muslims of the subcontinent under the great leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan. We have all heard those glorious stories of Pakistan being a great channel, conduit, through which scores of countries exchange goods, cultural traditions, and creative ideas. From the ancient Silk Route to today's Belt and Road Initiative, our region has always been a conduit and a channel of great opportunities. Today, shifting global geopolitical dynamics and the growing dominance of economic priorities have breathed new life into the ancient corridor, transforming it from a relic of the past into a strategic necessity for our bright future. Excellencies, our geography links the warm waters of the Arabian Sea
and the Persian Gulf, traversing the majestic Karakoram and Himalayan range and flowing through the timeless Indus Valley. We are at the confluence of China, the Eurasian land bridge, and the Middle East, a unique tri-junction of economic corridors connecting China, Central Asia, and the broader Middle East. Pakistan's long coastline also makes our ports of Gwadar and in future many other potential ports on this coastline, including Karachi, as key transit points on the maritime Silk Road. Honorable delegates, as I speak in this august assembly of our brotherly and friendly delegates, sharing my thoughts with you on this important topic, I am aptly reminded of the vision and foresight of my leader, Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif, who staunchly believed that peace and development are intertwined. One of his earliest initiatives after assuming power back in June 2013 was the signing of the China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of President Xi Jinping's Belt and Road Initiative. Therefore, CPAC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together across China, Central Asia, South Asia, and the Middle East. By linking Gwadar Port with China's Xinjiang province, it has opened new routes for trade and energy cooperation, serving as a vital gateway of connectivity, opportunity, and of course, cultural exchanges. Ladies and gentlemen, I take huge pleasure and honor in informing this distinguished audience that after the success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0, centered and based on fostering business-to-business partnerships, strengthening investment opportunities for Chinese companies in Pakistan, as well as from friendly and brotherly countries sitting on this round table, so that we can promote our mutual targets in peace and prosperity. Ladies and gentlemen, we are also working on a number of rail connectivity projects like the Trans-Afghan Railways and the Islamabad, Tehran, Istanbul connectivity. And I have already discussed this project with my very dear brother, President Tayyip Erdogan, and my very dear brother, President Masoud Pezeshkian of Turkey and Iran, respectively. And this opportunity is a great opportunity to revolutionize cross-border trade and connectivity. Also, ladies and gentlemen, enhanced air links to Central Asian countries, along with frameworks such as the TIR Convention and international
road transport mechanisms would really bring a great quantum jump in our trade, our joint venture investments, projects, and of course, people-to-people contacts, which will go a long way in bringing our countries together like never before. Ladies and gentlemen, I am confident that these mega projects would synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation, and energy collaboration in the region and, of course, beyond. Excellencies, in today's digital age, connectivity is not just limited to roads, railways, and air links. It is all about data, innovation, research and development, and technological integration. Pakistan is investing in digital infrastructure to ensure that we are adequately equipped to catch up with the fourth industrial revolution around the globe. And having a huge youth bulge in Pakistan, our demographic situation is a challenge as well as an opportunity in Chinese parlance. 60% of our population spans between 15 years to 30 years. So it's a huge challenge and also brings a huge opportunity. If we are able to provide ample opportunities to our youthful boys and girls in the field of IT, AI, vocational training, that will be our greatest asset. We don't have black gold, but we have our youth as our greatest asset, which will become the harbinger of Pakistan's speedy progress and prosperity in time to come. Ladies and gentlemen, it cannot be stressed enough that cooperation in the trade and economic spheres is a win-win proposition, offering rich dividends to all. This would strengthen our common stake in peace and reinforce efforts for development in the region. In conclusion, let me mention in all humility, but with fullest certainty at my command, that together we would sow the seed of cooperation so that we may harvest the fruits of development and prosperity for our people and the region beyond. May Allah Almighty give us the guidance and strength to work together very closely and move in unison in future to make this region and regions beyond our borders, which will carry the program of prosperity and progress for all time to come. Thank you very much. God bless us. Thank you, Honorable Prime Minister, for your inspiring words and for your continued support in promoting regional cooperation and connectivity across our shared transport corridors. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as we conclude now, there is going to be a group picture to commemorate this successful conference. May I request all ministers and heads of delegations and development partners to please join the Honorable Prime Minister
and the Honorable Minister of Communications for a group picture. All the ministers, heads of delegations, and heads of development partners, please join the Honorable Prime Minister of Pakistan, Mr. Muhammad Shehbaz Sharif, and Honorable Minister of Communications, Mr. Abdul Aleem Khan, for a group picture. ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کا اختتامی سیشن وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت اور عوام کی طرف سے شریک مندوبین کو خوش آمدید کہتا ہوں. ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس سے بات چیت کا اہم موقع فراہم کیا. کانفرنس دو طرفہ اور علاقائی روابط کے فروغ کے لیے بھی اہم ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خطاب میں کہا کہ کانفرنس دو طرفہ اور علاقائی روابط کے فروغ کے لیے اہم ہے. عالمی سطح پر ٹرانسپورٹ اور روابط کے نظام میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ہمارا خطہ موجودہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے تک روابط کا محور رہا ہے. بڑھتی معاشی اہمیت نے قدیم گزرگاہ کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے. گوادر کی طویل ساحلی پٹی اور کراچی بندرگاہ میری ٹائم سلک روڈ میں شامل ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کاروباری روابط، سرمایہ کاری اور مشترکہ خوشحالی پر توجہ مرکوز ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خطاب میں کہا کہ ٹرانس افغان ریلوے اسلام آباد تہران استنبول ریلوے کوریڈور پر کام کر رہے ہیں. علاقائی روابط میں اضافے سے معاشی اور تجارتی شعبے میں انقلاب آئے گا. یقین ہے کہ بڑے منصوبے خطے کی اقتصادی صلاحیتوں کو یکجا کریں گے. تجارت، معیشت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون سے نئے دور کا آغاز ہوگا. آج کے ڈیجیٹل دور میں روابط صرف سڑک، ریل یا فضائی راستوں تک محدود نہیں. آج کا دور ڈیٹا اور تکنیکی انضمام سے وابستہ ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے شعبے میں سرمایہ کاری کر رہا ہے. نوجوان نسل کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تربیت کی فراہمی ترجیح ہے. تجارت اور معیشت میں تعاون سب کے مفاد میں ہے. خوشحالی اور ترقی سے امن کے مشترکہ مفادات کو تقویت ملے گی. ہمیں آنے والی نسلوں کے خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کرنا ہے. وزیر اعظم کا ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس میں اختتامی نشست سے خطاب. انہوں نے حکومت اور عوام کی طرف سے شریک مندوبین کو خوش آمدید کہا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس نے بات چیت کا اہم موقع فراہم کیا ہے. ناظرین، ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کا اختتامی سیشن اسلام آباد میں جاری ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس میں شریک ہوئے اور انہوں نے اختتامی سیشن سے خطاب بھی کیا. خطاب کے دوران انہوں نے تمام تر امور پر اور ان کی اہمیت پر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کانفرنس دو طرفہ اور علاقائی روابط کے فروغ کے لیے بھی اہم ہے. عالمی سطح پر ٹرانسپورٹ اور روابط کے نظام میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ہمارا خطہ موجودہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے تک روابط کا محور رہا ہے. بڑھتی معاشی اہمیت نے قدیم گزرگاہ کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے. گوادر کی طویل ساحلی پٹی اور کراچی بندرگاہ میری ٹائم سلک روڈ میں شامل ہیں. پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کاروباری روابط، سرمایہ کاری اور مشترکہ خوشحالی پر توجہ مرکوز ہے. ٹرانس افغان ریلوے اسلام آباد تہران استنبول ریلوے کوریڈور پر کام کر رہے ہیں. علاقائی روابط میں اضافے سے معاشی اور تجارتی شعبے میں انقلاب آئے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ یقین ہے کہ بڑے منصوبے خطے کی اقتصادی صلاحیتوں کو یکجا کریں گے. تجارت، معیشت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون سے نئے دور کا آغاز ہوگا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں روابط صرف سڑک، ریل یا فضائی راستوں تک محدود نہیں ہیں. آج کا دور ڈیٹا اور تکنیکی انضمام سے وابستہ ہے. پاکستان ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے شعبے میں سرمایہ کاری کر رہا ہے. نوجوان نسل کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تربیت کی فراہمی ترجیح ہے. تجارت اور معیشت میں تعاون سب کے مفاد میں ہے. خوشحالی اور ترقی سے امن کے مشترکہ مفادات کو تقویت ملے گی. ہمیں آنے والی نسلوں کے خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کا اختتامی سیشن اسلام آباد میں جاری ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس میں شرکت کی ہے. کانفرنس میں ترکی، ایران، سعودی عرب، آذربائیجان، بیلاروس کے وزیر مواصلات نے شرکت کی ہے. Mr. Sheikh Rashid Alam, CEO, Brand Foundation, Mr. Farooq Alam Amil, Chairman of IPO Pakistan, Ministry of Commerce, Government of Pakistan, Dr. Talat Shabib, Director, China-Pakistan Studies Center, Qamar Muhammad Dilshad, former Secretary, Election Commission of Pakistan, former Caretaker Minister of Law, Dr. Shaista Lodhi, founder
of the aesthetic clinics in Pakistan. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Good morning, distinguished guests, profound business leaders, esteemed members of the diplomatic corps, ladies and gentlemen. It is both a privilege and a profound pleasure to be back amongst you today at the 16th edition of the Brand of the Year Awards. I am particularly touched to recall that this marks the fourth occasion I have had the honor of presiding over this prestigious ceremony. My previous three engagements during my tenure as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan allowed me to witness the nascent growth of the ecosystem. Today, as the Chairman of the Senate, I return not just as a guest, but as a witness to your remarkable journey of resilience and evolution. This continuity is not a mere coincidence. It is a testament to my unwavering belief in your cause. I have seen this platform grow, and more importantly, I have seen the brand business community it represents become an indispensable pillar of the national economy. Today, I wish to speak to you about a simple yet powerful idea, the brand power economy. In the traditional sense, an economy is built on agriculture, industry, and services. But in the 21st century, a new potent layer defines its strength, the power of its brands. Why is this so crucial? First, brands command premiums and build trust. A product is what you sell. A brand is why people buy. It is a promise of quality, consistency, and value. When Pakistani brands earn consumer trust, they can compete not just on price, but on value. This builds sustainable profitability, moves our industries up the value chain, and shifts our national identity from being a market of commodities to exporters of premium trusted products. Second, brands are catalysts for exports and soft power. Think of the nations we admire economically. We do not just think of their GDP. We think of their iconic brands, their automobiles, their technology, their fashion. These brands are their global ambassadors. They create a perception of quality and innovation that opens doors for the entire nation. Every Pakistani brand that succeeds internationally, from sports goods to IT services, from textiles to food products, it is not just earning foreign exchange, it is a rebuilding Pakistan's image on the global stage, piece by the positive piece. Third, the brand economy is an engine for jobs and innovation. A strong brand does not emerge from a vacuum. It is born from research, marketing, design, digital strategy, and sophisticated logistics. It requires creative minds, tech-savvy youth, and skilled professionals. This
system creates high-value jobs for our talented young population. It fosters a culture of innovation where the focus shifts from mere production to design thinking, customer experience, and global markets. The landscape has transformed dramatically. Since I first addressed this community, the digital revolution has redrawn a map of commerce. I am inspired by stories like that of the young entrepreneurs from villages like Miachandra, where no longer limited by geography, but are selling to the world on global platforms. This is the new face of Pakistani enterprise and is a face we must champion. Ladies and gentlemen, the government's role, as I see, is not to interfere, but to enable. It is to set policies that foster a stable, predictable, and supportive environment for you to thrive. It is to build the infrastructure, both physical and digital, that allows your ambitions to take flight. And it is to recognize, as we are doing today, and your success is intrinsically linked to Pakistan's prosperity. When your brands flourish, our industries thrive. When your industries thrive, they create jobs and opportunities. When opportunities abound, our nations prosper. The equation is as simple as it is powerful. To the award winners and nominees here today, I offer my heartiest congratulations. You are not just excellent business people. You are the architects of a new, confident, and economically vibrant Pakistan. You are the living proof that our nation lacks nothing in talent, creativity, or determination. Continue to innovate. Continue to build with quality and integrity. Continue to tell Pakistan's positive story to the world through the excellence of your products and services. I thank the Brand Foundation for their steadfast commitment to this cause and for once again extending this gracious invitation. My prayers are with you for even greater success. May your brands become household names, and in doing so, may they help build the prosperous Pakistan we all envision. Pakistan Zindabad. चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मजबूत ब्रांड्स मजबूत मईशत की जमानत हैं। पाकिस्तान के नामवर ब्रांड्स ने आला मयार के लिए अवार्ड हासिल किया। अवार्ड के जरिए सार्फिन का एतमाद और मार्केट में ब्रांड की हैसियत को उजागर करता है। ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मुल्क की सनतों और कारोबारी बरादरी की खिदमात का एतराफ़ है। मुल्क की तरक्की के लिए मुआशरे के हर तबके को अपना किरदार अदा करना है। मुल्क की ब्रांड की तामीर की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और आसिन, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। कश्मीर है जन्नत निशान, ये मुल्क है, ये हर जगह तहरीर है। चौबीस अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर का यौम तासीस मनाया जाता है। 1947 में जब बर्रे सगीर को तकसीम किया गया तो कश्मीर के अवाम की अक्सरियत मुसलमान थी और वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते थे, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया।
اس فیصلے کے خلاف کشمیری عوام میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں 24 اکتوبر 1947 کو سردار محمد ابراہیم خان کی قیادت میں آزاد حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ غازی ملت سردار ابراہیم خان اور ان کی 6 رکنی کابینہ نے آزاد خطے کی نظم و نسق کے لیے انتھک محنت کی۔ اسی حکومت کا پہلا دارالحکومت پلندری کے ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں قائم ہوا۔ بعد میں مظفر آباد اس کا دارالحکومت قرار پایا۔ آزاد کشمیر کی نمائندہ حکومت نے ایک طرف بھارتی فوج کی جانب سے آزاد کشمیر پر حملے کا بہادری سے مقابلہ کیا، دوسری طرف بھارتی فوجوں کے مظالم کی وجہ سے بے گھر ہونے والے مہاجرین کی آبادکاری کا بھی فریضہ سر انجام دیا۔ آزاد کشمیر حکومت کی درخواست پر حکومت پاکستان نے اس خطے کے انتظام کی سرپرستی اپنے ذمہ لی۔ دفاع، مواصلات، خارجہ امور کے علاوہ آزاد کشمیر کی حکومت اپنے خطے کے انتظامی معاملات میں خود مختار ہے۔ پاکستان کا آئین کشمیر کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ پوری ریاست کی آزادی کے بعد پاکستان کے ساتھ اپنے تعلق کو از سر نو استوار کرے۔ آزاد کشمیر کو تحریک آزادی کا بیس کیمپ کہا جاتا ہے۔ اس خطے کے قدرتی حسن کی وجہ سے یہاں سیاحت کے نمایاں امکانات موجود ہیں۔ پاکستان نے 78 برسوں میں آزاد حکومت کو سیاسی اور انتظامی معاملات میں آزادانہ پالیسیز بنانے کا اختیار دے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان اس کے مالیاتی نظام کو چلانے کے لیے وسائل مہیا کرتی ہے۔ یوم تاسیس کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کا ایک اہم سنگ میل ہے، جسے پورے آزاد کشمیر میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر کشمیری عوام اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انفرادی نہیں، اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے، انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ پولیو سے پاک پاکستان، ہر بچے کے لیے۔ کشمیری عوام کو استصواب رائے کے مطالبے کی پاداش میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ بھارتی افواج کشمیریوں کی تحریک آزادی کو کچلنے کی ناکام کوشش میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیری شہداء نے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے مقبوضہ جموں کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس درینہ تنازع کے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کے لیے عملی اقدامات کرے۔ پانی زندگی ہے، لیکن فکر انگیز پہلو یہ ہے کہ ہم تیزی سے صاف پانی کے سنگین بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ ہم روزانہ لاکھوں گیلن صاف پانی ضائع کر دیتے ہیں۔
दूसरी जानिब बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को पीने के साफ पानी के लिए मीलों का सफर करना पड़ता है। याद रखें, अगर आज हमने होश के नाखुन ना लिए तो 2040 तक पाकिस्तान में पीने के साफ पानी की किल्लत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। इससे पहले कि हम पानी की बूंद बूंद को तरसें, पानी के ज़िया को रोकें और जिंदगी को खतरात से बचाएं। अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। आजकल के डिजिटल दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़ज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं, डेटा और तकनीकी इंतजाम से वाबस्ता है। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से माशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। खुशहाली और तरक्की से अमन के मुश्तरका मफादात को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशस्त से खिताब। आने वाली नस्लों के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अस्सानी की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अस्सानी का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने के लिए कतर के अज़्म का इयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। तरसीलात ज़र के बहाव बिलखुसूस खलीजी ममालिक से आने वाली रकूम के बारे में गौर। तरसीलात में इजाफे, बेहतरी और सहूलत के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। तरसीलात की मुंतकली के वक्त में कमी और लेन देन के अखराजात में कमी लाई जाए ताकि समंदर पार पाकिस्तानियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके। नायब वज़ीर-ए-आज़म मईशतों की तरक्की और माशी खुशहाली में ब्रांड्स की मरकजी हैसियत। ब्रांड्स का मुल्कों की साथ की मजबूती और इक़्तिसादी सफारतकारी में अहम किरदार। पाकिस्तानी ब्रांड्स बैनुल अक़वामी सतह पर मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर कर रहे हैं। निजी शोबे और हुकूमत का ब्रांड डेवलपमेंट में इश्तराक खुशाइन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में 16वें सालाना ब्रांड्स अवार्ड्स तकरीब के शुरका से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई। 8 खवारिज जहन्नम वासिल, 5 जख्मी। कार्रवाई खुफिया इत्तलात पर लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में की गई। अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खवारिज को फरार होने का कोई मौका न मिल सका। मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारिजी के खात्मे और क़याम अमन तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हूँ हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। ये कश्मीर है जन्नत निशान, ये मुल्क है, ये हर जगह तहरीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको प्रोग्राम सीधी बात में खुश आमदीद कहते हैं। आज की अहम तरीन खबर यह है कि वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने ये सिफारिशात भेजी थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के हवाले से। आज वफाकी काबीना ने बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दे दी है और वजारत दाखिला को ज़ाबिते की कार्रवाई के लिए ये जो मंजूरी है ये भेज दी गई है। TLP पर इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट सेक्शन 11B1 के तहत पाबंदी आयद की गई है और ये कहा गया है कि TLP जो है वो फ़िरका वाराना इंतहा पसंदी और तशद्दुद में मुलव्वस रही है। इसके साथ साथ इस जमात की वजह से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात भी ख़राब हुए हैं। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जिस तरह से मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ की हैं अपने जलसे जुलूसों के दौरान, अपनी रैलियों के दौरान, इसमें जो है पुलिस एहलकार शहीद हुए, इसमें सैकड़ों पुलिस जो है वो ज़ख्मी हुए, आवाम भी ज़ख्मी हुई और इसके साथ साथ इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया है। तो ये आज की एक बहुत अहम पेशरफ्त है जो सामने आई है। लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि मुल्क इस वक्त एक डायरेक्शन की तरफ ऐसा लग रहा है कि गामजन है और पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन की वजह से जो पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन बेहतर हुई है और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है, अब शायद रियासत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि उसके लिए थ्रेट बनने वाले या उसके लिए ख़तरा बनने वाले जो अनासर हैं उनकी हर सूरत में सरकूबी की जाए। और जब हार्ड स्टेट की बात होती है, सख्त रियासत की बात होती है, तो फिर उसमें इस किस्म की ज़ाहिर है कार्रवाइयों की किसी भी ज़िम्मेदार रियासत में इजाज़त नहीं होती, क्योंकि यहाँ रियासत के अंदर किसी की भी जान, इमलाक और जो मुल्क है, जो ज़मीन है, उसमें अमन व अमान का जो क़याम है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसी बुनियाद पे ये फ़ैसले किए गए हैं। इसके साथ साथ लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमारी जो सियासी सूरत हाल है उसमें हलचल दिखाई देती है। अपोजिशन में तहरीक इंसाफ मौजूद है, अगरचे के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया हुआ है। जो वहाँ पे एक अपोजिशन मौजूद है कौमी असम्बली के अंदर, वहाँ से ज़ाहिर है दरख्वास्त भी आई है, एक नए अपोजिशन लीडर को नामज़द किया गया है। उस पर भी जब स्पीकर वापस पहुँचेंगे तो फ़ैसला होगा स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा से कोशिश की जाती रही कि जो अपोजिशन की जमात है तहरीक इंसाफ, उसको भी मुल्की तरक्की में शामिल किया जाए, एक साथ उनको शामिल किया जाए ताकि एक इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुजाहरा हो और पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुँचे कि बहाज़ जो सियासी मामलात हैं अगर उस पर इख्तलाफात हैं भी, लेकिन इसके बावजूद मुल्क के लिए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक तरह से सोचती हैं और ज़रूरत भी इसी बात की होती है। लेकिन ग्राउंड पे हम इस वक्त देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला आ चुके हैं, उनकी काबीना बहरहाल अभी तक नहीं बनी और वज़ीर आला की ये ज़िद है कि वो अपने बानी से मिलेंगे, उसके बाद काबीना का वो ऐलान करेंगे। लेकिन 8 रोज़ से ज़ायद गुजर गए हैं, बहरहाल गवर्नेंस के मसाइल पैदा हो रहे हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल भी हैं। ये तहरीक इंसाफ पे या उनकी जमात पे भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो फौरी तौर पर फ़ैसला करें जो कुछ हो सकता है। इतना फ़ैसला जब अगर नया वज़ीर आला आ गया है, मुंतखब हो गया है, तो उसको बहरहाल कुछ फ़ैसले ख़ुद भी करने चाहिए और निज़ाम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या हम आने वाले दिनों में जो हमारी एक दिफाई कामयाबी थी, सिफारती कामयाबी थी, उसे हम अपनी माशी कामयाबियों में रिफ्लेक्ट कर सकेंगे, ढाल सकेंगे? ये एक अहम तरीन सवाल है। और इस वक्त मुल्क के लिए जो सियासत है ज़ाती सियासत वाला होकर उसकी कितनी ज़रूरत है, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच। अली गौहर बलोच साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कादिर खान मंदुखेल। कादिर खान मंदुखेल साहब आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें बैरिस्टर शाहिद मसूद ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और तजियाकार एंकर फैसल अब्बासी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल आपका भी शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब आपसे इब्तिदा करेंगे। आपको लगता है कि कोई डायरेक्शन ज़ाहिर है जिस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं उसमें बहरहाल एक इज्तिमाइयत की तो ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातों को एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा बशमूल अपोजिशन के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात ये है कि मुल्क में अरसा दराज से आपने देखा कि एक कल्चर को परवान चढ़ाया गया और वो कल्चर था इंतशार का कल्चर। इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है वो जमहूरियत के लिए स्ट्रगल की, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है,
دیگر ہماری ملک کی پارٹیز ہیں، لیکن جب سے پی ٹی آئی نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو انہوں نے ملک کی سیاست کو انتشار زدہ کیا، اور اس میں ملک میں جو ہے وہ انارکی پھیلانا، ملک کے اندر ایسے واقعات کرنا، جتھوں کے ذریعے پاکستان کی املاک کے اوپر حملہ آور ہونا اور اس طرح کے واقعات کرنا، جس میں خاص طور پر 9 مئی کے واقعات قابل ذکر ہے جن کے اوپر تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ٹی ایل پی کا دیکھا کہ ٹی ایل پی کے فورم کے اوپر بھی جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں وہ بڑے پرتشدد قسم کے احتجاج ہوئے ہیں، جس میں نہ صرف پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جس میں خاص طور پر پولیس ہے، پولیس کے لوگوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا، شہید کیا گیا، اور بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا، جو کہ انتہائی تشویشناک حالت میں ابھی بھی زیر علاج ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت اور ریاست ہے، اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے جتھوں اور گروہوں کو وہ سیاست سے دور رکھا جائے جو پاکستان کے اوپر بار بار جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کی اور عوام کی زندگی کو اجیرن کرتے ہیں، پاکستان میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نہ صرف حوصلہ شکنی کی جائے بلکہ اگر انہوں نے کوئی سیاسی لبادہ اوڑھنے کے بعد وہ ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں تو ان کو قانون اور آئین کے شکنجے کے اندر لایا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے حالیہ ٹی ایل پی نے احتجاج کی آڑ میں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا کیا اور پاکستان میں امن و امان کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہے اپنی کابینہ کے ذریعے قانونی طریقے کے ساتھ سفارشات وفاق کی طرف بھیجی ہیں اور وفاقی کابینہ نے بھی جو ہے وہ پاس کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جتھے اور گروہ جو سیاست میں انارکی پھیلا رہے ہیں ان کو قانونی طور پر ان کے خلاف ضرور اقدام کیا جائے، اور اس میں کسی ایک پارٹی کا ذکر نہیں ہے، اس میں ہر وہ پارٹی یا ہر وہ جتھا یا ہر وہ گروہ جو سیاست کا لبادہ اوڑھ کر۔ جی ٹھیک، قادر مندو خیل صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ قادر صاحب اب ظاہر ہے کہ اگر ہم جی علی گوہر بلوچ صاحب، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، ہر لیول پر ان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور ایسے گروہوں کو جو ہے وہ کا محاسبہ کیا جائے گا سرکاری سطح کے اوپر، ملکی سطح کے اوپر۔ جی قادر مندو خیل صاحب، سیاسی جماعتوں پہ بڑے سخت وقت بھی آتے ہیں، آپ حکومت میں بھی رہتے ہیں، آپ اپوزیشن میں بھی رہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ سخت وقت دیکھا، بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ پہ جب حملہ ہوا ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ ظاہر ہے کارکن جو ہے وہ جذباتی تھے، لیکن اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملک کی سلامتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ سیاست میں سخت وقت آتے ہیں، آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور آگے چلنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب، میں نے بڑی غور سے علی گوہر بلوچ صاحب کی باتیں سنی، جو انہوں نے منطق پیش کی ہے ٹی ایل پی کے حوالے سے، اسے تو 1000 گنا زیادہ پی ٹی آئی نے کی ہے۔ تو کیا پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے؟ یہ جنہوں نے نہ فوجی تنصیبات چھوڑے، نہ انہوں نے شہداء کے یادگار چھوڑے، نہ انہوں نے جس نے پاکستان کا اعلان کیا ریڈیو پاکستان پشاور چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو گالی گلوچ افواج پاکستان کو، سپریم کورٹ کے ججز کو، سیاسی لوگ تو ہم تو عادی چڑھ گئے، تو کیا اس کو بھی یہ اسی طرح نمٹیں گے جس طرح ٹی ایل پی سے نمٹے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے خیال میں جلد بازی کی ہے، یا وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے سوال کیا کہ غصہ جو ہے نا وہ عقل مند ہے یا بیوقوف، تو میں کہتا ہوں غصہ بڑا عقل مند ہے، اس وجہ سے کہ وہ طاقتور آدمی کے اوپر غصہ نہیں آتا ہے انسان کو، کمزور کے اوپر غصہ آتا ہے، تو لہٰذا غصہ تو عقل مند ہوا۔ تو میرے خیال میں حکومت نے جو یہ کام کیے یہ بھی وہ غصے والی عقل مندی سے کام لیا ہے، جو کہ کمزور کے اوپر تو ان کا بس چلا مگر پی ٹی آئی کے اوپر ان کا بس نہیں چل رہا ہے۔ جو آپ مجھے بتا دو، جو ٹی ایل پی سے پہلے جو ٹی ایل پی کے اوپر سیدھے گولیاں چلائی، حاملہ خواتین کی چہرے اور سینے پہ گولیاں برسائی ہے، تو کیا اس کا کوئی حساب کتاب ہوا؟ اس کا کوئی ہوا؟ آیا کون ذمہ دار تھا اس کا؟ اس کے بعد ابھی دوبارہ جب یہ گجرام والا میں ہوا تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا ہو گیا؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے، میں نے بڑے غور سے ان کو دیکھا تھا، عظما بخاری صاحبہ کی پریس کانفرنس آج،
एक भी ऐसा फुटेज उन्हें नहीं दिखाई है जो टीएलपी के लोग गोलियां चला रहे हो, क्लाशनकोव लिए हुए, कारतूस दिखा रहा है जो अलग तो किसी के भी कारतूस हो सकता है, फोटो दिखा रहा है, गाड़ियां जली है, एक भी ऐसा एविडेंस, वैसे वकील में उसको देख रहा था, ऐसा एक भी एविडेंस नहीं था जिससे आप ये साबित कर सके कि ये दहशतगर्द जमात है और इन्हें दहशतगर्दी की है। मैं दोबारा कहूंगा उसके मुकाबले में तो पीटीआई ने 1000 गुना ज्यादा क्लाशनकोव भी चलाई है, गोलियां भी चलाई है, अमला को नुकसान भी पहुंचा है, शोधा के अमला को नुकसान पहुंचा है। तो क्या अली गौर बलोच साहब से पूछो कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी कब लगेंगे? अली गौर बलोच साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, फिर मैं बैरिस्टर साहब की जानिब जाऊंगा। देखिए, बात ये है कि बिल्कुल जिस तरह से टीएलपी ने कंडक्ट किया, ये पहली दफा नहीं है। ये जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी और उसमें भी इन्होंने पुरतशद्दद वाक़यात किए थे और इसी पीटीआई की गवर्नमेंट ने इनके ऊपर पाबंदी लगाई थी। इनके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी मिली हैं जिसमें कि इनके बैरून मुल्क से इनकी जो फंडिंग हो रही थी, फिर जिस तरह से आपने देखा, इससे बड़ा क्या सबूत है कि जिसमें जो मुरीद के एसएचओ थे जवान, जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको शहीद किया गया और बेशुमार लोग जो सबूत के तौर के ऊपर हॉस्पिटल्स के अंदर दाखिल हैं। तो जाहिर है, एक सवाल, एक बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बिल्कुल पीटीआई ने भी इसी तरह के वाकयात किए और टीएलपी ने भी इसी तरह के वाकयात किए हैं। तो ये ज़रूर है कि इन सब को कानून के शिकंजे में लाना चाहिए, मैं इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ। और जाहिर है कि हुकूमत इन चीज़ों पर गौर कर रही है कि इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने वाली जो जत्थे और ग्रोह हैं, उनको किस तरह से कानून और आइन के शिकंजे में लाया जाए। लेकिन अगर आप कहें कि टीएलपी के लोगों ने कम किए, तो वो भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने एक दफ़ा नहीं, जितनी दफ़ा भी एहतजाज किए वो पुरतशद्दद एहतजाज है और उसमें हलाकतें हुई हैं बेशुमार लोगों की। बेशुमार लोग माजूर हुए, बेशुमार लोग मजरूब हुए, बेशुमार लोग जख्मी हुए, बेशुमार लोग शहीद हुए। तो वो उसमें तो कोई दूसरी और यकीन करें कि मेरे हल्के से कुछ लोग जो थे वो उधर कारोबार शादरा में करते थे। मैंने उनसे पूछा कि उधर, उन्होंने कहा जी दुकानें लूट ली गई और टीएलपी के जब जुलूस आए तो हमारी दुकानें लूट ली गई और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था। और लोगों के मतलब है कि इन्होंने हर तरह से अवाम के जज्बात को मजहब के नाम के ऊपर उभारा। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा मुसलमान है जो हजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाद मुबारक से मोहब्बत नहीं करता, बासियत मुसलमान। तो हमारा तो ईमान इस पर है, तमाम बासियत मुसलमान तमाम लोगों का। तो इस चीज के उनका नारा लगाकर जो है वो इंतशार पैदा करना और इस्लाम के बरअक्स जिस चीज का हमें, इस्लाम तो हमें सब्र का और तहम्मुल का और रवादारी का दर्स देता है, ना कि हम मतलब है कि पुरतशद्दद वाकयात करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पाबंदी लगी है ये बिल्कुल ठीक लगी है। अलबत्ता कोई और ग्रोह और जत्था भी इस कैटेगरी में आता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है, शायद वसूल साहब आप फरमाइएगा। जाहिर है कि आप लोग ऑपोजिशन में मौजूद हैं और सारी नज़रें फिर आप पे होती हैं। जो हमने माजी में देखा है, अब आपके नए वज़ीर आला भी आ चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। हम क्या तवक्को रखें कि आपकी जो सियासत है, जब आप बात करते हैं कि आइन और क़ानून के मुताबिक, आइन और क़ानून के दायरे के अंदर रहते हुए, तो एक ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल की हम तवक्को रखें, क्योंकि ज़ाहिर है नए वज़ीर आला के आने से ये बातें तो सामने आई कि बाज़ लोग कहने लगे कि नहीं जी, ये तो फिर ऐसा ना हो कि कहीं विफाक के ख़िलाफ़ चढ़ाई हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने शरीक गुफ्तगू किया। गुजारिश ये है सर कि मेरे इन दोनों भाइयों ने बात का आगाज़ और बात का अख्ताम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया। मेरा ख्याल है इनको रात को ख्वाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नजर आती है और इनका दोनों पार्टीज का दिल है किसी तरीके से इस पार्टी को वाइप आउट कर दिया जाए, क्योंकि ये वाहिद सियासी जमात है जिसने नामसाद हालात के अंदर पाकिस्तान में 2 करोड़ 75 लाख वोट लिया और आज अपोजिशन के अंदर बैठी और बाकी तमाम जमातें जिन्होंने 2.25 करोड़ वोट लिया वो आज 2/3 मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना के बैठी है। जहां तक ये बात तशद्दुद वाली और ये पॉलिटिकल पार्टी को प्रेस्क्राइब करने वाली करें, तो अगर मैं पाकिस्तान की तारीख में जाऊं तो 1957 के अंदर एनएपी बनी थी, अयूब खान ने उसको बैन किया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सेम वही प्रोसीजर जो आज अडॉप्ट किया जा रहा है उन्होंने अडॉप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट 75
में रेफरेंस भेजा, लेकिन उस सियासी जमात का वो नैब बंद हुई तो अवामी डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई। आज वो जो है ANP के नाम से चल रही है। वही सारे अमल वली खान, अब्दुल वली खान साहब, शरानी साहब, वो सारे लोगों ने पाकिस्तान के अंदर सियासत की है। हुकूमत वक्त है, उसके खिलाफ एहतजाज है ना जी। तो हुकूमत वक्त के खिलाफ तो उस वक्त जालों ने भी एहतजाज किया था, तो बाद में वो लोग शोहदा कहलाए। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि हमें इस पाकिस्तान को इसके दस्तूर जो 1973 है उसके मुताबिक चलाएंगे तो ये सारे पॉलिटिकल मामलात हल हो जाएंगे। ये जो हैजानी कैफियत है ये हल हो जाएगी। आप स्पेस दें, पॉलिटिकल स्पेस दें। आप जो सियासी वर्कर है उनको सांस लेने का मौका दें। आप उनके साथ नेगोशिएट करें। रियासत ने माँ का किरदार अदा करना है, ना कि रियासत ने जबर करना है। मैं अगर अमेरिका की मिसाल दूं, 2 दिन पहले की बात है, अमेरिका के 2700 शहरों के अंदर 70 लाख आदमी पंफलेट्स एहतजाज करते हुए निकला, जिसने ये अपने पंफलेट्स के ऊपर लिखा हुआ था नो किंग। आपने देखा क्या उन्होंने कोई वहां पे तोड़फोड़ की? क्या वहां पे किसी किस्म की आंसू गैस चली? क्या वहां पे कोई पथराव हुआ? क्या वहां पे किसी ने किसी की अमलाक को नुकसान? पूरी रेडलाइन ये है, जो प्रोटेस्टर्स से उनको पता था हमारी रेडलाइन ये है, किसी ने रेडलाइन क्रॉस नहीं की। क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये सारे मामलात को पॉलिटिकल लोगों ने हल करना है, ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएशंस करना है। तो नेगोशिएट करें आपस में बैठ के, पॉलिटिकल स्पेस एक दूसरे के लिए निकालें। बैरिस्टर साहब, आपने बड़ी अहम बात की और आपने अमेरिका की मिसाल दी कि वो लाखों लोग आए और उन्होंने एहतजाज किया और कोई गमला नहीं टूटा, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। इसी नुक्ते को लेके हम आगे चलेंगे और इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। फैसल अब्बासी, आप बताइएगा, जाहिर है कि